Well, hello and a very warm welcome. Thanks for tuning in to News 9 Live. Just a couple of hours ago, when the Home Minister was in Kibitu in Arunachal Pradesh, launched that Vibrant Villages program to counter territorial gains that were made by China. At the same point, we now had Arunachalis coming out in huge numbers with banners protesting against Chinese incursions and their territorial gains as well. Banners reading, "We are not China," banners reading, "We will not go down the road that of Tibet." We also have the Home Minister's bite when he visited Kibitu. Let's quickly listen into that as well. आज पूरा देश निश्चिंत होकर सो रहा है, चाहे हमारी किसी भी सीमा हो, अरुणाचल का प्रदेश हो, लद्दाख का प्रदेश हो, कश्मीर हो या कोई भी प्रदेश हो, हम निश्चिंत होकर देश के मध्य भाग में, देश के उत्तरी भाग में सो रहे हैं। इसका कारण हमारे हिमवीर आईटीबीपी के जवान और हमारी थल सेना का पराक्रम और उनका त्याग और बलिदान है। उन्हीं के कारण कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आई 100 की सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहां पर उपस्थित है। And well, we'll play those visuals out for you as well. Locals at Arunachal Pradesh coming out in large numbers across several cities and towns to oppose China's recent gambit of renaming 11 places in Mandarin and to show stand with India. Video clips on social media showed the people of Arunachal taking out a large rally to condemn Xi Jinping as well. Demonstrators including monks, women and children made their wishes clear. "We stand by India." Participants carried banners and placards condemning Chinese attempts to lay its claim on Arunachal Pradesh, which Beijing calls Zhangnan. Well, on Tuesday, India's Ministry of External Affairs slammed China for protesting the visit of Union Home Minister Amit Shah to the northeastern state. Responding to China's protest against HM Shah's visit, the Ministry of External Affairs spokesperson Arindam Bagchi said that Arunachal Pradesh was, is and will always be an integral and inalienable part of India. Bagchi, while responding to China's statement, said, "We completely reject the comments made by the Chinese official spokesperson. Indian leaders routinely travel to the state of Arunachal Pradesh as they do to any other state of India." Also on Monday, it was Home Minister Amit Shah who gave perhaps the clearest message to China from the border village of Kibitu in Arunachal Pradesh that we just heard. Now, meanwhile, my colleague Aditya Raj Kaul, Executive Editor, Strategic Affairs, is with me in the studio here. And joining us on the broadcast is Lieutenant General Shaukin Chauhan, former DG Assam Rifles, and Subir Bhaumik, senior journalist and author. Very warm welcome on the broadcast. Aditya, just to get the ball rolling first and foremost, I mean, the Vibrant Villages program, it was set out with a particular aim. And what we're seeing today taking place in Arunachal Pradesh, do you think the ethos, the Indian ethos, of what it wanted to cultivate in those lands, do you think it's really happening? Obviously, it's happening. You know, people in Arunachal know that they're Indians first. And that's what they're reflecting. They're hurt. They're completely hurt by the Chinese statements, the Chinese incursions, and the kind of renaming of, the Indian villages as per the Mandarin language. So this has happened in the past as well, and it's happening again. And one thing, Kabir, that we are missing out is that it was not just the Indian flag that these villages were holding. They were holding also the images of Dalai Lama and the Tibetan flag. This is something that hurts Chinese, more than anything. Indian flag in this region is very normal and it is seen often. But to see a Tibetan flag both in Arunachal Pradesh, Ladakh and Dharamshala is something that they certainly cannot tolerate. One thing is very clear, that hundreds of common local population, Indians in Arunachal coming out in different villages, is sending out a loud message to Beijing that these kind of incursions, these kind of tactics of intimidation are not going to work out. Yesterday, India's External Affairs Ministry also made it abundantly clear that Arunachal Pradesh was, is and will remain a part of India. These theatrics that China indulges is probably propaganda from their end. But this kind of narrative is not going to stand anymore.
Well, Subir Bhaumik, senior journalist and author, with us also on the broadcast. Mr. Bhaumik, how promising are the visuals that you've seen coming out of Arunachal at this moment? Well, these visuals are actually the visual reflection of the sentiment of the people of Arunachal. Don't you ever forget that most of these people up there on the frontier with China are Buddhists. They're Monpas, they're ethnically very close to the Tibetans, and there are a lot of Tibetan origin people there as well. So for them, India is the only option, and the Indian army, let me make it very clear, is their major source of protection and also in some cases livelihood. Because in this frontier area, the army is the biggest purchaser of local products. And also, I want to point to something more interesting. You look at the way the Indian army treats the locals and the brilliant relationship that exists between the Indian army and the locals in Arunachal Pradesh. Contrast this with the PLA and the local Tibetan population, where systematically the PLA, the Chinese intelligence, and all these other Chinese Red Guards have traditionally demolished Buddhist images. There was a demolition 3 days back as well in Nangching in Tibet. These things continue. Demolition of, monasteries, demolition of Buddha statues. And therefore, the Chinese PLA is seen as an occupation force. And the Indian army is seen as a friendly army defending their own land. So Arunachal is more than anybody else in Northeast. You go to Arunachal and you see the brilliant Hindi they speak. Now, I don't hold it up that you must know Hindi to be an Indian. The point is, they learn Hindi of their own accord. It's not something that the Pakistanis imposed, tried to impose Urdu and ended up losing East Pakistan, which is now Bangladesh. So here, people learn Hindi, people speak Hindi with the Jawans, and they have brilliant chemistry, the sort of local chemistry. So that's very important. So the Indian army is a friendly army, it's a protective army. उनको बचाने के लिए वहां खड़े हैं. And on the other hand, the PLA across the border with Tibet is an occupation force. The last point I want to make here is China has the habit of calling Arunachal southern Tibet. It's time we say, okay, southern Tibet, why not the whole of Tibet? You have occupied Tibet, and the Tibetans here want independence. We need to play the Tibet card more aggressively. If China plays all these, cards, that it is prone to finishing. Because I understand one thing. I have been part of the Kolkata Kunming Forum. I visited China regularly. I know the Chinese psyche. They respect power. So if you chicken out when they are putting pressure on you, they will be right on top of you. Sar pe chad jayenge. You need to show flex muscles. You need to come. Right now, we are exactly doing that, Mr. Bhaumik. We are exactly doing that. We are flexing our muscles and definitely not checking out at the moment. Finally, that's happening. So yeah, right. We're a little too late at this process, but better late than never. Lieutenant General Shaukin Chauhan, former DG Assam Rifles, also with us. Lieutenant General, help us understand. We've seen visuals of how the Chinese army has mobilized and made barracks in those little towns all across the disputed LAC. How soon can we expect the Indian Army to mobilize the VVB, the Vibrant Villages program, into doing the same on our side of the border? Firstly, thank you for calling me on the show. Secondly, I must say that I agree with Aditya as well as Subir completely on the issues related to Arunachal. Thirdly, as far as your question is concerned, you should be absolutely clear that we have done exactly the same thing. We are well poised on ground. We have our troops. We've mobilized our troops. Ever since over the last 3 to 4 years, ever since China decided to try and get some territory of ours in Ladakh, the Eastern Army had mobilized its troops in Arunachal Pradesh. And we are fully mobilized. We are fully ready. And the Vibrant Villages program that has been there is actually not started just now. It's been going on for a very long time. I myself have served in Arunachal almost 3 to 4 times, in both in Tawang and that is Western Kameng, as well as in the areas near Itanagar. And I am absolutely clear that we have the people with us. We will continue to improve their ability to be Indians.
The main thing was that at about 20 years ago or even 15 years ago, there was a lack of governance there because many of our programs hadn't reached. But now with the roads having improved, well, we are absolutely confident that we can hold on to Arunachal Pradesh, that we will give China a bloody nose if it ever decides any misadventure there, and that the people of Arunachal have been with us, will always be with us. Because, as Sudhir Bhaumik said, the Indian Army is not an occupation force. We are their army, people from them, and we have a lot of love between both the Arunachalis and the Indian Army. Over to you. Well, absolutely. The bonhomie, the growing bonhomie between the Indian Army and the Arunachalis, that is something that is certainly, something that is a brighter element in this particular story here. But, picking up from what Mr. Bhaumik said, Aditya, about playing the Tibet card more aggressively. Do you think we haven't been doing that already? There was some protests in McLeodganj as well just a couple of months back. And McLeodganj has been seeing these kind of protests as well. Really some, deadly skirmishes taking place on that Tibetan factor as well. Do we need to play the card more aggressively? Have we not been doing that ever since? What's your take on this? Kabir, I completely agree with Subir that we need to play the Tibet card more aggressively. For decades together, we have given a safe shelter to the Tibetan community who have now a Tibetan government in exile for decades seated in Dharamshala. They have their own parliament, they have their own government and mechanisms in place. But on the other hand, we haven't played the Tibetan card as much as strategically we should have. Instead, what we have seen is a very meek kind of a response for decades together. No matter which government was in power, there was no engagement from the Prime Minister and the Dalai Lama. There was no formal communication or messaging and engagement between the government of India and the Tibetan government in exile. And also there were several controversies when the Tibetan flag was hosted at the Pangong Lake and different other locations in Arunachal. There were controversies and India played it down. Instead, I think India should have played it up. The Tibetan soldiers also of the Indian Army have done a significant job protecting the territorial integrity of the country, Ladakh and Arunachal as well. So I think India slowly has been waking up in the last few years, both when it comes to infrastructure development in the border areas along the LAC and also playing a strategic card against China. And Galwan perhaps has been that game changer which brought in this paradigm shift in policy towards China as well. I really hope that this Vibrant Villages program and the visit of Home Minister Amit Shah is only the first of many steps that are taken to uplift the economy of this border region, to bring an ecosystem in place so that the common people get employment opportunities, better infrastructure, schools, colleges, and other opportunities as well. And certainly, we are capable enough already through the Indian Army, the ITBP and the paramilitary forces, and the common population will be standing shoulder to shoulder with them to protect the territorial integrity of India in the region. Mr. Bhaumik, the Chinese Foreign Ministry, it must be tracking the Home Minister's, step-by-step movements in Arunachal, his travel from Assam to Arunachal. We certainly have frustrated and irked the Chinese foreign intelligence. Do you think there's some sort of retaliation that's on the cards from there? What must be going on inside the minds of, the Chinese foreign officials? Well, the Chinese must be trying to figure out that, by going in for these incursions in Ladakh, and then also, in Yangtze, in Arunachal Pradesh, they have actually alerted the Indian military machine to the dangers of complacency. And now the Indian Army and the Indian military apparatus is well aware of the fact that you can't take a chance when it comes to the Chinese, because it will be a great mistake to see individual incursions as efforts of local commanders. The Chinese work to a plan, be it military, be it politics, be it media operations, everywhere. They have a plan, they have a script, and they go by it. What we can do as Indians is we have ingenuity. Hum jugaad wale hain. We can shock and surprise the Chinese, and that's the way to deal with them. They have a script, they have a plan, they work by that. If you do something which sort of unsettles them because it's not in the plan, it sort of goes outside the parameters of the plan, and that's how it works. One of the major ways of reinforcing
our connect to Tibet is to push the campaign at UNESCO to seek the unique, property of Soya Rigpa. This is a Himalayan kind of a medical treatment, which the Chinese claims is originally theirs, and therefore they want the GSI tag for it. The Indians have also strengthened their claims, because at the end of the day, this was part of the, Himalayan range Buddhism. It is intricately connected with the practice of Buddhism in the Himalayas and this particular treatment. The Chinese, being A, Chinese, and B, communists, have nothing to do with this, but they have reinforced their claims. The point is, these are different areas. I'm talking of a multi-domain approach to counter China. You have to hit them everywhere, because they believe in a policy of 1,000 cuts. They believe in warfare on all fronts. Read Sun Tzu, Art of War, the ancient Chinese sage, who's some kind of a, somewhat like Chanakya, but, focuses more on war rather than on governance, which Chanakya does. And he said, the best victory is the one which is fought without winning a war. Now, all these incursions, all this muscle flexing, all this propaganda, jives, protests, and all that is part of that Sun Tzu kind of a thing. They want to win a war without actually fighting one. Because China knows today they are in no position to start a full-scale war. And they are not fools like the Russians. They are much more pragmatic, very calculating people. They're not like Russians who will sort of start a fight at the drop of a hat. But here I must end by saying, and this is a very important point, I want to stress this multi-domain approach at which we have not been good so far. Even now, when it comes to theater commands and stuff like that, which is integrating a military effort, we have all kinds of turf wars. The Air Force does not like something, Navy does not like something, Army does not. This whole approach of ye mera zamindari hai, wo uska zamindari hai, this approach has to be given a goodbye. We have to think of warfare and countering a hostile power like China through a complete integration of all resources and a multi-domain approach. कि साहब आप यहाँ हिमालय में गड़बड़ करोगे तो there will be some problem for you. Somewhere down, we'll start something in Myanmar by putting something in the newspapers there about Chinese, baby food exports, which has melamine content. So well, that proverb that you spoke about, that Chinese proverb that you spoke about, it is a smart proverb, and we have been late to the party. You're right, but let's take those exact questions to Lieutenant General Shaukin Chauhan. Lieutenant General, do you think when it comes to a multi-dimensional approach and across different areas, not just Arunachal, in the Himalayas, on all these ends, do you think when it comes to a multi-dynamic, a multi-dimensional approach, the Indian Army is equipped to retaliate, muscle to muscle with the Chinese PLA? Absolutely. I mean, why does Subir feel we're not doing it? The fact that we allowed the Dalai Lama to come and stay with India, the fact that the Assam Rifles, of which I was the Director General, escorted the Dalai Lama from Tibet into India, and we have given him a government in exile, means we understood the Tibetan card long ago. And we don't need to play it. It's our card. Right. So that's the first issue. Secondly, we have over the last 50, 60 years, post the 1962 war, been absolutely clear that China is our first enemy. And therefore, we have, with whatever resources we have made sure that we have prevented China from coming inside both Ladakh and Arunachal Pradesh. And I must assure you that we are absolutely more than ready to deal with any threat of China. Anytime, anywhere. This is not an idle boast. I have been the Director General of the Assam Rifles. Before that, I was the GOC 1 Corps. I have served in Ladakh. I was the commander of a brigade that was fighting the Chinese on the line of actual control. So I'm absolutely clear that we are militarily absolutely capable, and we are in sync with the rest of the armed forces. Navy, well, absolutely, Lieutenant General, that is a decorated career, and from all the conversations that we've heard so far, it seems like the Indian Army is anything, it is ready to take and tackle on anything. It seems like there is no news. Arunachal has always been a part of India. Arunachalis have always been Indians, but it did warrant a discussion in terms of the Vibrant Village program. Meanwhile, let's quickly cut across
to Ashok Gehlot, Rajasthan Chief Minister, who's addressing the media. सर्विसेज दी है आपको, उसको लेके बहुत लोग खुश हैं। हेल्थ सर्विसेज को 25 लाख का बीमा हमने कर दिया, सीटी स्कैन एमआरआई सब फ्री है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्री है। सब कुछ होने के बावजूद भी हम बहुत पीछे अभी। हेल्थ सर्विसेज के आंकड़े देखो भारत सरकार के, तुलना करो राज्यों की देश के अंदर, तो हम बहुत पीछे हैं। ये मुझे एहसास इस बात का है। उसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि जो शुरुआत मैंने करी कोरोना के बाद में या कोरोना के पहले, उसका फायदा लोगों तक कैसे पहुंचे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। 98 के अंदर मैंने एक स्कीम बनाई थी, पहली बार जब मैं सीएम था, 25 साल पहले, मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोर्स। आप मेरे कुछ लोगों को मालूम होगा, इतना वो बहुत बड़ी स्कीम थी, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोर्स। मुझे इस बात का दुख रहा कि मैंने हर मीटिंग में उसको कोट किया, मीटिंग कि मैंने स्कीम बनाई है। उस वक्त बीपीएल की संख्या बहुत बड़ी थी देश के अंदर, राजस्थान के अंदर। मैंने कहा उनके लिए कितना ही पैसा खर्च होगा, 1 लाख 2 लाख, उस जमाने का 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख सरकार देगी उसको। आज जो 25 लाख में बात कर रहा हूं मैं, उस जमाने में मैंने बात करी, सरकार देगी आपको। उसके बावजूद आपको आश्चर्य होगा, जब चुनाव आए थे 2002-3 के अंदर, तो मैं मीटिंग में जाता तो मैं हाथ खड़े करवाता, तब तक कितने लोगों को मालूम है कि मैंने स्कीम बनाई आप लोगों की। फिर मैं हाथ को गिनता, वहां देखता कहीं 25, कहीं 50, कहीं 60 हाथ खड़े होते। तो मैंने कहा तुम 3000 लोग बैठे हुए हो, अगर ये स्कीम जो हम बार बार 4 साल से बोल रहे हैं, 4.5 साल से, अगर आप सबको मालूम होती तो कितने गरीबों का भला हो जाता। इतनी बड़ी संख्या में बीपीएल के लोग हैं, इलाज फ्री होता। जो आज मैं इलाज फ्री कर रहा हूं, उस वक्त मैंने कहा था सबका इलाज फ्री होता उस वक्त, और मैंने 8-10 लाख रुपए मंजूर किए उस जमाने के अंदर भी। कहने का मतलब ये है, आज ये कैंप क्यों लगा रहे हैं हम लोग? कैंप इसीलिए लगा रहे हैं, वो उदाहरण मेरे सामने है कि 4.5 साल, 4.5 साल बाद में भी हाथ खड़े 50, 60, 70, 80 हुए थे। ये क्यों? ये कैंप ऐसा होगा, अभियान, हर आदमी को मालूम पड़ेगा मुझे कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं। सब आईटी बेस्ड कर रहे हैं हम लोग। आदमी जाएगा, अपने नंबर देगा, आधार नंबर देगा, जन आधार नंबर देगा, बिजली के बिल का नंबर देगा उसको। उसके अलावा और 10 स्कीम में कौन कौन फायदा लेने वो एलिजिबल है, हो सकता है अभी आज उसको मालूम ही नहीं है। वो उसके कंप्यूटर में आ जाएगा कि तुम 5 स्कीमें 6 स्कीम लेने के एलिजिबल हो, और 6 स्कीम लाभ उसको मिल जाएगा। और जो हम आह्वान बार बार मीडिया वालों को कर रहे हैं, जनता को कर रहे हैं, आप लोगों को बात पहुंचाओ कि कैंप लग रहे हैं, आप वो कैंप में जाना चाहिए। वो आएंगे कैंप में, उनको मालूम नहीं कि मुझे मैं लाभार्थी बन सकता हूं इसका, तो मालूम नहीं, वो ले ही नहीं पा रहा है, वो लाभ मिलेगा। हम तो ये भी कहेंगे जो लेना नहीं चाहे, कुछ लोग होते हैं जो कि मान लो बीपीएल से एपीएल में आ गए हैं, पैसे वाले हो गए, वो चाहेंगे कि मुझे लाभ नहीं चाहिए, उसको जरूरत नहीं है वहां आने की, वो पैसा बचेगा तो हम कोई और स्कीम को एक्सटेंड कर देंगे, गरीबों को भला हो जाएगा। इस प्रकार से सोच समझ करके जो कैंप लगा रहे हैं हम लोग, उसमें आप जानकर खुशी होगी कि पूरा रोड मैप बन चुका है। और बजट और जो बात की जा रही है महंगाई की और राहत की, इसके आधार पर ही हम चाहेंगे कि पहले 700 कैंप लग रहे हैं, 700 शुरू होंगे कैंप और 2700 कैंप लगेंगे टोटल। इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे और प्रशासन गाँव के संग, प्रशासन शहरों के संग के साथ साथ में ये कैंप महंगाई राहत के अलग लगेंगे वहीं पर। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस अभियान से राजनीतिक पार्टी, चाहे कोई पार्टी हो, कार्यकर्ता जुड़ेंगे, लोगों को इत्तला करेंगे, लोग आके वहां पर राहत लेंगे, महंगाई राहत। तो महंगाई इतनी भयंकर है जिसके लिए राहुल गांधी की यात्रा निकल गई 3500 किलोमीटर की। महंगाई, बेरोजगारी, नॉन वायलेंस और अमीर गरीबी की खाई, यही मेरी थीम रही बजट के अंदर भी। उस थीम को लेके मैं आगे बढ़ा हूं और बजट पेश मैंने किया है
तमाम वो स्कीम आई है इसके अंदर जो कि मैं आपको बता रहा हूं, और ये कैंप लगातार चलेंगे, बंद नहीं होने वाले हैं। इस 2700 कैंप मैंने कहा है आपको, ये तो 2 महीने चलेंगे। कुछ कैंप ऐसे हैं वो परमानेंट चलेंगे, और जब तक चलेंगे जब तक कि हर व्यक्ति जाके जुड़ नहीं जाए। वरना मैंने देखा है कि कई लोग जुड़ नहीं पाते इसके अंदर। इसलिए ये सारी स्कीमें जो है वो एक से बढ़ के एक हैं, और मैं समझता हूं कि उसका लाभ ऐसे वक्त में हम देंगे पब्लिक को, तो आने वाले वक्त के अंदर जो हमारी और योजनाएं, मैं भी उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं, पर मानव संसाधन राजस्थान का बेस्ट बने। आज हमने विदेशों के अंदर पहले 200 छात्र थे, अब मैंने 500 कर दिए इस बार। पूरी फीस आने जाने का खर्चा, ट्रैवलिंग का, रहने का खर्चा वहां पर, और फीस पूरी गवर्नमेंट दे रही है। क्यों दे रही है? राजस्थान का बच्चा अगर मानव संसाधन के रूप में ऊपर के आएगा, उसकी पर्सनलिटी आने वाले वक्त के अंदर, तो वो बच्चा जो है राजस्थान के, प्रदेश का और देश का भला करेगा। तो राजस्थान को गौरव होना चाहिए कि हमारे जो छात्र है या युवा है वो कितने आगे बढ़े हैं। ये सोच है। इस प्रकार से हमारी हर योजना का एक अलग मर्म है जिसको समझने की आवश्यकता है। यही बात। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस आरंभ करते हैं। थीम है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मुख्यमंत्री जी इधर मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल ये है कि आप महंगाई से राहत दिलाने की बात कर रहे हैं, कैंप लगाने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल यह है कि आप महंगाई से राहत दिलाने की बात कर रहे हैं, कैंप लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के नए अध्यक्ष तो सांप्रदायिकता की बात करें तो इस लड़ाई को आप कैसे जीतोगे चुनाव में? कि मैं कह चुका हूं, आपको कहना चाहूंगा, मेरा लक्ष्य 2030 है। उसमें महंगाई राहत पहला कदम है, और कई कदम उठाए जाएंगे। हमने रोड मैप बना रखा है, समय समय आपको हम ब्रीफ करेंगे। कौन क्या कर रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें जनता का मैंडेट मिला था सेवा करने का, हमने कसर नहीं छोड़ी है, ये देश पूरा जानता है। अभी एआईसीसी ने जो ट्वीट किया है, पहली बार एक राज्य ने जो उपलब्धि हासिल की है स्कीमों की, वो राज्य स्कीमों का नेतृत्व प्रदान कर रहा है अन्य राज्यों को। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या होगा कि हमारी हाईकमान ने ये कमेंट किया है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, और हमारा लक्ष्य वो ये सेवा करने का। मुख्यमंत्री जी, आपकी सभी योजनाएं अच्छी है, देश भर में चर्चा भी हो रही है, लेकिन आपके कुछ अपने हैं वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अच्छा माहौल बन रहा है, नैरेटिव सरकार के प्रति बदल रहा है, चाहे सचिन पायलट हो या अन्य नेता हो। क्या उनकी बयानबाजी से लगता नहीं कि स्कीम्स से लोग गुमराह होते हैं? या हमारा लक्ष्य वही महंगाई राहत, हम एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, महंगाई राहत। उसके अलावा हमारा कोई ध्यान जाते नहीं, राइट लेफ्ट जाते नहीं, ध्यान ना जाएगा। सीएम साहब इधर राइट में आपके, सीएम साहब आपके राइट में। आज आप सुबह वंदे भारत के कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं, साथ में ये भी कहा कि पूर्ववर्ती रेल मंत्री किस तरीके के फैसले लेते थे। ये भी कह दिया कि आप राजनीतिक झंझावातों से जूझने के बावजूद प्रदेश के विकास के लिए समर्पित हैं। उन्होंने आपकी मित्रता के लिए भी आभार जताया। क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी इस पर? मैंने ट्वीट कर दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। धन्यवाद। सीएम साहब इधर। सीएम साहब, ये जो महंगाई राहत कैंप है, ये पूर्व में बहुत से कैंप लग चुके हैं, उनसे ये किसी प्रकार अलग होगा या उसी तरीके का होगा? और इससे आपको कितनी उम्मीद है कि लोगों को राहत मिल पाएगी इस महंगाई से? देखिए, उनके जो वो कैंप लगे हैं वो तो लगते ही हैं। इस बार इनके लिए अलग से महंगाई राहत शिविर लग रहे हैं वहीं पर ऑन द स्पॉट। उसके अलावा हर जगह जहां कलेक्टर तय करेगा, कलेक्टेड है मान लीजिए, बस स्टैंड है और कोई जगह है मान लो, सब जगह कैंप लगेंगे।
और इसमें ये छूट भी है, कोई व्यक्ति राजस्थान का किसी जगह जाएगा, वो जैसे मान लो बीकानेर का आदमी जैसलमेर जा रहा है, रास्ते में कोई कैंप पड़ रहा है, उसके रास्ते में रुके, अपना नंबर दे, वहीं पे उसका रजिस्टर हो जाएगा। पूरा कंप्यूटर, पूरा आईटी बेस है। सर मेरा सवाल, बीजेपी लगातार सर बम ब्लास्ट का आरोप लगा रही है, इस पर आपका क्या कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई पीआईएल दायर करेंगे आप? कुछ सुप्रीम कोर्ट में आगामी कोर्ट? सर बम ब्लास्ट पे आपका क्या प्लान है? बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं उसके लिए। और सर आपने अभी ट्वीट की बात की, उसमें लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री का नाम नहीं है इस ट्वीट में। नहीं, ट्वीट किया मैंने प्रधानमंत्री जी को लेके किया। नहीं, लालू प्रसाद यादव भी रेल मंत्री रहे हैं सर, पूर्व। उसमें आप पढ़ लीजिए, उसमें सब बात आ जाएगी। भाई कौन बोल रहा है? राइट साइड। मुख्यमंत्री महोदय, 10 राहत के बारे में आपने बताया कि रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है और जो लाभ नहीं लेना चाहे वो रजिस्ट्रेशन नहीं भी कर सकता है। राजस्थान की 1/4 जनता ने 850 रुपए देके और चिरंजीवी बीमा योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। अब बजट में आपने उसको 10 लाख से 25 लाख कर दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या उसके लिए भी उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा 10 से 25 करने के लिए? वो प्रति वर्ष होता है, वो एक अलग बात है। नहीं, बीमा जिसके पास है, प्रीमियम फ्री है सबके लिए। जैसे गायों का हम बीमा कर रहे हैं, 2 गायों के दुधारू पशुओं का, कोई प्रीमियम नहीं लगेगा उसका। उसी ढंग से ये 850 रुपए जो हैं, 2 कैटेगरी बनाई हुई है। अधिकांश लोगों को फ्री प्रीमियम सरकार दे रही है उनका। कुछ कैटेगरी है जिनका जो है 850 रुपये उनसे ले रहे हैं हम लोग। 850 क्या होते हैं? 25 लाख का बीमा है, वो अलग रहेगा। सर ये जो मैं समझा नहीं आपकी बात। 2030 तक का आपने विजन पेश किया है, 2030 तक का विजन पेश किया। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस सरकार को? Well, so that was the Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot addressing the media, saying that his focus is on nothing but price rise at the moment. And for everything else that you'd want to put the Rajasthan Chief Minister on the spot and hear, well, he's already tweeted about it. You can go on his Twitter feed. Time for us to slip into a quick break. News 9 continues with other content. Don't go anywhere.